Hi, good morning. Welcome to XII Classes. This is an introduction. Dear all my students, some basic principles. What are the universal laws says? So we should know some universal principles and adopt that with that accept and adopt the laws. The universal law says there will be no gain without taking any pain. So that means if you have to put some effort to gain something. Okay, so that is a principle in that. Transformation is a universal phenomenon. Changes are happening and will continue to happen. That means, for example, what was there in some 30-40 years back, there was any mobile or there was any possibility of this type of classes, or there was any possibility of any means that video lectures or video classes or video talking or any other mobile devices or anything. Today it is possible. That now tomorrow there will be something else. So this transformation is a universal. The nature is also changing according to that. On the passage of time, nature is also changing. That is a universal phenomenon of the universal phenomenon. So changes are happening and will keep happening. Now, hard work never fails. This is for you students. Hard work never fails. Do hard work and gain. Because in this short period of our life, there are several things you can do, and you can contribute to yourself, your family, your society and the nation. So for that you have to do some hard work. This is your first year of junior college. So take a firm step and strong step. You must have a vision about your future. Before entering into this field, this is bookkeeping and accountancy, the commerce subject you have selected. There must have some vision in your mind for your future. So just set that goals. On that basis, you decided to choose this subject. So now, my advice is to you all. Be sincere to you. First, you be sincere to you. Do your studies and practice regularly. That is more important. We all are doing some sort of work every day and keep doing the work. Without work, no one will be able to survive. This work we are doing because this is the necessity of life. When there is any necessity, people will automatically do that. Why we do job? Because we do job for money. Why we need money? We need money to fulfill our needs, because needs is to be fulfilled. What are the needs? There are several needs. You need food, you need good clothes, you need a place, best place of. Then when the income increase, then your standard of living increase. You need a motorbike, you need a car, you need a luxury car, you need a super luxury car, like that. That goes on. See, that type of means when the needs are restricted, and accordingly you need to work, and when needs are not restricted, you have to work according to that. So for that purpose we all are working. So can we fulfill our needs without money? No, it is not at all possible. Without money we cannot fulfill our needs. You just go and buy something from a shop for free. You won't get it. Even 1 rupee thing, you won't get it. So you need money. We will not get anything without paying money. So money plays an important role in our life. Why people do job in a company? Because people provide service to get wages or salary to fulfill their needs and to look after their family. Why do a businessman do business? Businessman put his money and his hard efforts to gain more money, not only to fulfill his and his family's needs and ambition, but also to make reserve for his future, because we don't know what is going to happen tomorrow. Tomorrow is unborn, it is unpredictable. So
everybody has that intention that today what we are getting, we are not like birds or animals. Whatever we get today, we will eat and just enjoy. Like not like that. We human beings, that mean they have some desire and calculation in their mind. When they are getting some income, start getting income, they reserve for it tomorrow. So that's what businessman or anybody, means any good salaried person also just means just work out and then save something for the future. So businessmen do business for his earning, for his family's good and luxurious life, and then again not only for that, he keep it for as a reserve for his future, for his business, for his other future life, like that. Why do you all study? क्यों study कर रहे हो? Because you want to do higher education, and the focus is to get a good job, well paid job, and a secured job, better standard of living in the society. इसके लिए सब लोग आप काम कर रहे हैं. We all are doing for this purpose. All students, when I came to Mumbai, then this was my purpose. Means just along with the studies, I wanted to do higher education because I want to be elevated. So I did put my effort, and then from a very lowest bookkeeping staff, vouching clerk to a CEO level. So it's possible. So what I'm telling you that everybody is studying for the purpose of getting a good job, a good salaried job, and just elevate their position to a higher top management, then or they want to do some business because they want a better standard of living in the society. Some of you may select a better job, and some may select a profession, and some enthusiastic students or some enthusiastic youth can do business. They may go for selected businesses. This is up to individual's choice. There are various interests, various tastes, various views of the individuals. Accordingly, they select their profession or a job or a business. So select the best suitable to you and be the best in your career. जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हो या कुछ प्रोफेशन में जाना चाहते हो या कुछ बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका तरीके से आप एक प्रॉपर गोल सेट करके उसके हिसाब से वर्क करके बी बेस्ट इन योर कैरियर. जो भी अच्छा हो उसमें जो बेस्ट बन जाओ. दैट इज़ माई एडवाइस. द अर्ली बर्ड रीप्स मोर क्रॉप्स. जो भी जितना जल्दी आप जो करेगा, उसका मीनिंग ये है जितना जल्दी आप जो करेगा उतना अच्छा फ़ायदा है. तो बेटर यू रीच योर टारगेट एट द अर्लीस्ट. जितना जल्दी आप जो आपका जो टारगेट जो गोल जो सेट किया है उसको अचीव करें उतना अच्छा है, बिकॉज टाइम नेवर वेट फॉर एनीबडी. नाउ अबाउट द सब्जेक्ट. अभी इतना जो मैंने आपका जो प्रीवियस जो एक एडवाइस और एक जनरल ये दिया था ना, ये जो सब्जेक्ट के बारे में क्या है हम लोग, ये जो आज का जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. उसके बाद में जो हम लोग है ना नेक्स्ट इससे हम लोग अपना क्लासेस चालू करेंगे. सो उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है. अभी ये जो इसमें जो क्या है वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ अबाउट द सब्जेक्ट. अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जो ये जो फील्ड में आ गया है उसमें किसी को अकाउंट्स फिनेंस और सब में इंटरेस्ट होएगा, किसी को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होएगा, और ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, और किसी को दोनों में इंटरेस्ट होगा. लाइक देयर आर सेवरल एग्जांपल्स. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. My intention is to build a strong base for you in this subject. That is my very interest. आप लोग को सबको जो एक strong base बना के दो, जो मेरा जो classes जो videos जो regular follow up करेगा, ये जो करेगा, तो एक strong base बनना चाहिए. My procedure is to teach and make learn in the class. जो class में ही आप लोग को सीखना चाहिए. तो जो भी जो पढ़ते जाएगा, अगर जो ये नहीं रहेगा तो बार बार देख के वो सीख सकता है. ठीक है. और कुछ रहेगा तो यू कैन जस्ट डिस्कस लेटर. टू मेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. अब ये जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, मतलब आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके लिए इसमें आ गया है. जो या टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया, ये जो सब्जेक्ट लिया होगा
ये कुछ तो पर्पस के लिए जो आपको जो इंटरेस्टेड फील्ड में है ये आपने जो सेलेक्ट किया है, तो अभी आपको जो उसमें मोर इंटरेस्ट बना के आपको जो मोटिवेट करके या आपको जो इसमें ज़्यादा ये इंटरेस्ट दिखा के आपको जो इसको इसमें जो अट्रैक्ट करके आपको ज़्यादा आगे आगे बढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट दिलाने का है सब्जेक्ट में. सो दैट इज़ द माई मोटिव. You have to read and revise the class regularly. Make it a habit. Spending 2 hours for studies in a day out of 24 hours will definitely make a great change in your life. जो भी मेरा स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स है मेरा, जो सब्सक्राइब करके जो स्टूडेंट्स जो है रेगुलर जो स्टूडेंट्स रहेगा, जो स्टूडेंट्स को मेरा एक एडवाइस है, एक जो मेरे जो क्लासेस है, वो जो वीडियोस क्लासेस है वो रेगुलरली देखो और ये एक हैबिट बन जाओ. और मेरा एडवाइस ये है, जो भी आपका जो है वो जो आपका जो 24 घंटा आपको मिलता है दिन में, आउट ऑफ द 24 आवर्स 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा, बाकी भी आपको 22 आवर्स है, तो इसमें से ये जो 24 आवर्स में 2 घंटा आप स्टडीज़ के लिए यूज़ करेगा, दिस मोर देन सफिशिएंट. पहले ये जो क्लास सीखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो ये करते जाएगा और वो आपका ज़िंदगी में, आपका लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेंगे डेफिनेटली. दिस लर्निंग इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्ज़ाम. मैंने जो क्लास दे रहा है, दिस नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम. मेरा जो प्रीवियस स्टूडेंट्स था, ये जो कोरोना काल में जो मैंने क्लासेस लिया था वो फ्री क्लासेस था, बिकॉज आफ्टर द रिटायरमेंट आई हैव टू डू समथिंग टू मेक मीन्स बिजी माई सेल्फ. सो मेरा स्टूडेंट्स जो था, 2-3 स्टूडेंट्स, वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, और बिकॉज वो तरीके से उसको सिखाने का. और देन कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको 98, 99 ये जो परसेंटेज में गया है, कोई भी 95 का बिलो गया ही नहीं है. तो द थिंग इज़ दैट नो, आप लोग को ये वो तरीके से, मुझे मेरा पर्पस क्या है उसे, तो आउट ऑफ दिस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें अपना सीए का ऑप्शन में गया है, सीए कर रहा है अभी. सीए जो फाउंडेशन करके उन लोग ने अभी सीए का इसमें ज्वाइन किया है. सो दैट इज़ पॉसिबल. अभी वो उसमें जो मैंने जो मुझे लगा ओके, ये जो मेरा जो ये जो कर रहा है जो, तो मैं सोचा चलो ठीक है, जो भी थोड़ा पब्लिक को, थोड़ा स्टूडेंट्स को मैंने ये जो मेरा नॉलेज हो जो शेयर करूं, मेरा जो अपना जो टैलेंट है और एक्सपर्ट है वो वो एरिया में भी यूज़ करूं, सो दैट we can develop so many talented and knowledgeable students that is required for our country. So that is the purpose. So मेरा काम ये भी है, नॉट ओनली टू मेक जो खाली स्टडी करके आपको ये करो करके, आपको जो इसमें एक बेस बनाने का, जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का, खाली एग्जाम पर्पस के लिए नहीं. एग्जाम पर्पस का तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये आपको जो है ना, यू शुड बेनिफिट फॉर योर फ्यूचर कैरियर. आपका जो फ्यूचर कैरियर, फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई जो एमबीए करना चाहता है, कोई सीए, आईसीडब्ल्यू है, या कोई सीएफए, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा स्कोपफुल जो जॉब है, उसमें अगर जो प्रोफेशन है उसमें जाना चाहता है तो वो कर सकता है. अभी मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस में ये जो बहुत ज़्यादा जन है ना, जो इसमें कोई ये जो एमबीए, एक जन एमबीए कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जन सीए ज्वाइन किया है, और बहुत जन अभी मीन्स जो सीएमए ये सब करना जा रहे हैं. तो यू मस्ट अप्रोच विद दैट इंटेंशन. वो इंटेंशन, वो फोकस से आप आगे चलना है. I am going to give you classes on the basis of available time, and within that time we have to complete the portions, class test revision, modern exam. We have 10 chapters in the bookkeeping and accountancy subject, so that I will just tell you which are the topics. So in 11th you have 10 chapters. Introduction to bookkeeping and accountancy, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping, journal, ledger, subsidiary books, bank reconciliation statement, depreciation, rectification of errors, final accounts of proprietary concern, single entry system. These are the topics we have to cover. Now, do not think that study of this subject is difficult.
इट इज़ ईजी इफ़ यू फाइंड फन इन स्टडी। कोई भी जो आप जो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ है ना, आपको जो कुछ उसमें कुछ मज़ा है, उसमें कुछ अच्छा है, उसमें कुछ जो उसमें जो बेनिफिट जो सोच के उसको आगे करना है, और उसको एक फन रूप में जो स्टडी करो। मतलब जो भी आप जो आपको एक पिक्चर देखा तो वो पिक्चर देखने के बाद में आपको पूछेगा उसका स्टोरी क्या है, आप आराम से बोलेंगे। लेकिन एक नॉवल आप पढ़ के आपको पूछेंगे उसमें क्या है, उसमें तो जल्दी तो मालूम नहीं पड़ेगा। जो भले थीम तो पता चला होगा, लेकिन ईच एंड एवरी ये पार्ट आपको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन सो व्हेन यू स्टडी इट, जस्ट इमेजिन सम स्टोरी, सम फिल्म is going in your mind, उसके हिसाब से स्टडी करो, तो that absorbs, your brain absorbs that and store it in your memory. You must have an ambition in life. अभी आपको जो आपके मन में एक डिज़ायर, एक ambition होना चाहिए. In order to achieve that ambition, you must set a goal in life. वो ambition को अचीव करने के लिए यू मस्ट सेट ए गोल इन लाइफ। आपका लाइफ में एक गोल सेट करो, वो गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो गोल्स के से काम जो मेहनत करना चाहिए। टू अचीव दैट गोल यू मस्ट डेडिकेट योरसेल्फ एंड पुट योर हार्ड एफर्ट्स। वो गोल अचीव करने के लिए आपको खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। तो उसमें आपको खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा और आपका एफर्ट्स डालना पड़ेगा। In other ways, you must have a passion, means desire. To achieve that, you must act. वो passion achieve करने के लिए you must act. Action होना जरूरी है. Then the success is sure. That is, passion plus action is equal to success. I request all my students to study regularly. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, वॉच अगेन एंड अगेन। वीडियो बार बार देख लीजिए, फोर्स करके या कुछ करके इसे देख लीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट और जस्ट टू क्लोज टू 100% मार्क। Above all, you must have a strong base in the subject. Most important, you all must make a strong base in the subject. That decides your career. That is the most important. ये मैं हर क्लास में, हर वीडियो में बताते जाएगा। रीज़न ये है, ये आपको एक रिमाइंडर एवरी टाइम में रिमाइंडर देते जाएगा। हर बार जो आप जो हैमर करते रहेगा तो उसको तो फ़र्क पड़ता ही है, और हर बार जो जितना बार हम ब्रश करते हैं उतना बार शाइन करते जाएगा। दैट इज़ अ पॉलिसी, दैट इज़ अ रूल ऑफ द नेचर। सो ये मैं आपको जो बार बार रिमाइंड करते जाएगा, तो जितना जन मेरा जो वीडियो देखते रहेगा उसको ये बार ये आएगा। सो डोंट गेट इट बोर्ड, ये मेरा एडवाइस है, ये मैं बार बार आपको बोलते जाएगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट जो क्लासेस जो चैप्टर 1 नेक्स्ट वीडियो से चालू करेगा। थैंक यू ऑल।